Today we shall start the study of algae, and the study of algae is called phycology. Study of algae is called phycology or algology. Study of algae is called phycology or algology, and the father of algae is ALGAE. So we shall first we shall study the features of algae. It is an aquatic plant. It is aquatic plants. It founds in freshwater, ponds, river, ocean, etc. In addition to that, it also found on moist soil, moist stone. It also found on moist soil, moist stone, barks of the tree, and in association of fungi, that is lichen. ये फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, रिवर, ओशन इन सब जगहों में पाया जाता है. साथ ही साथ मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट स्टोन या दरख्तों के छालों पे या फंगस के एसोसिएशन में फंगस के साथ ये लाइकन कहलाता है. जब एल्गी प्लस फंगस हम कंबाइनली कॉल लाइकन. और साथ ही साथ समझे ऑन द animals, that is sloth bears. So they are found on that. Second, all the fungus are जितने फंगस होते हैं वह क्लोरोफिलस होते हैं. दैट इज दे मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. यानी वह लोग अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनाते हैं. The algae are chlorophyllous. Photosynthetic means they make their food by means of photosynthesis. अच्छा, next one. Forms of algae. Algae are of different types. Some ये बहुत किस्म के होते हैं. जैसे some यूनिसेलुलर, मोटाइल, एक कोशिकीय होते हैं और गतिशील होते हैं. एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनस, दिस इज यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एंड मोटाइल, गतिशील होते हैं. नेक्स्ट यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल, ये भी एक कोशिकीय होते हैं लेकिन नॉन मोटाइल, इनमें गति नहीं होता है. गति की वजह के लिए फॉर द मूवमेंट फ्लैजेला इज एसेंशियल, बट देयर इज नो फ्लैजेला इन द नॉन मोटाइल. Examples:
chlorella. Next one, also found in colony. Examples: volvox, means so many units are combinedly form a net-like structure, that is volvox. इसमें बहुत से इकाई जो है, बहुत से एक आपस में एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर से बंधे होते हैं, जैसे volvox. नेक्स्ट वन, फिलामेंटस. फिलामेंटस होते हैं, धागे के नुमा होते हैं. एग्जाम्पल्स: यूलोथेरिक्स. One commonly which is very known, that is a spiral. कुछ ऐसे होते हैं जो फिलामेंट्स धागे के जैसे होते हैं, जैसे यूलोथेरिक्स. कुछ वॉलबॉक्स कॉलोनी के जैसे होते हैं, समझे. कुछ ब्रांच्ड होते हैं, समझे. एज फॉर एग्जाम्पल्स, फ्यूकस, लेमिनेरिया, ये सब क्या होते हैं, धाग ब्रांच्ड होते हैं. और ये सब दे आर फाउंड इन सी एंड ओशन. तो ये कुछ टाइप्स, इस तरह के अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, अलगी पाए जाते हैं. नाउ रिप्रोडक्शन इन एल्गी. Reproduction in algae. All the three types of reproduction found in the algae. Reproduction algae में तीनों तरह के reproduction पाए जाते हैं. As for examples, vegetative. First one is vegetative. Second one is asexual. And third one is sexual. So in the algae, all the three types of reproductions are found, that is vegetative, sexual and asexual. Now the first one is vegetative. Vegetative reproduction takes place by means of fission. It takes place by means of fission and found in filamentous alga. Filamentous algae. One thing that is algae, its singular is alga. Now the vegetative reproduction takes place by means of fission. विखंडन से होता है, टूटने से होता है. Suppose this is the filamentous alga. It will split into several parts. And now each part develop into the new individual. ये कई भागों में टूट जाता है और सभी भागों से एक एक नया individual plants निकल जाता है. That is known as vegetative. Next one is asexual. Asexual reproductions by means of स्पोर्स के माध्यम से होता है, जो which is of many types, that is motile, spores known as zoospore, motile. This is the like that motile zoospore. And one thing, the spores are the asexual unit. ये asexual units होते हैं for the reproduction. Reproduction के asexual units होते हैं. And non-motile spores are called
एप्लानोस्पोर, समझे? जो मोटाइल होते हैं उसको जूस्पोर कहते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं उसको एप्लानोस्पोर कहते हैं। इसके अलावा एक्सेप्ट दैट हिप्नोस्पोर्स होते हैं जो echinates. These are the asexual reproduction unit, and about each we will study in the species wise, genus wise. ये asexual reproduction इतने तरह से होते हैं, इतनी इकाइयां हैं जिनके माध्यम से asexual reproduction algae में होता है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें तीन तरह के तीनों पाए जाते हैं। वन इच आइसोगेमस, नेक्स्ट वन इज एन आइसोगेमस, एंड थर्ड वन इज oogamous. Iso and identical gamete. Both gametes are identical in shape. One thing you know, gamete is the sexual reproductive unit. Gamete is the sexual reproductive unit. As जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वैसे गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं। तो आइसोगेमस आइडेंटिकल, गैमेट्स आर आइडेंटिकल। इन दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। एंड बोथ आर मोटाइल, दोनों मोटाइल है बिकॉज हैविंग फ्लैजेला। एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनस। In some cases of Chlamydomonas also an isogamous is found that is unidentical. Unidentical gametes होते हैं जिसमें, और इसमें क्या होता है कि they are maybe motiles, both are motiles but different in size. They are दोनों एक ही जैसे होते हैं लेकिन साइज में अलग होते हैं। ये भी क्लामाइडोमोनस की कुछ जातियों में पाई जाती है। नेक्स्ट वन oogamous. oogamous मीन्स मेल इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल, जिसमें मेल क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं और फीमेल्स नॉन मोटाइल होता है। दैट इज दिस इज मेल यूनिट, दिस इज फीमेल यूनिट। मेल यूनिट, फीमेल यूनिट, they are small and motile and that is big and non-motile. So such type of sexual gametes are called oogamous. तो ये कुछ विशेष टाइप्स के, मतलब कुछ टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो एल्गी में पाए जाते हैं, which we shall study about genus, we shall see that how such phenomenon takes place. जब हम लोग जेनस का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कैसे ये सब बातें होती है। Its importance. Importance and as well as its uses, because algae have photosynthesis, because algae have photosynthetic, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, so help in carbon dioxide fixation, because चूंकि यह फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी अपना भोजन स्वतः बनाते हैं, बाय मीन्स ऑफ सनलाइट दे टेक द CO2 एंड आफ्टर मेकिंग फूड्स कन्वर्ट इट इनटू O2, CO2 लेकर O2 में बदलते हैं। इस तरह दैट इज हेल्पफुल इन द CO2 फिक्सेशन। इसके अलावा
ये इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो यूज्ड एज फूड, स्पेशली marine algae like laminaria, that is kelp, is useful for the food. Understand? It is useful for the food. Now the algae Gelidium and Gracilaria are used to grow microbes. They are used to grow microbes and also used in the formation of ice cream and jellies. They are the algae used in the formation of ice cream jelly. आइस क्रीम और जेली इन सबों के बनाने में भी इसका यूज होता है, साथ ही साथ माइक्रोब्स को उगाने में इसका यूज होता है. नेक्स्ट वन, क्लोरेला एंड एस्पेरुलिना. ये ऐसे algae जिसमें जो है रिच्ड विथ प्रोटीन. इनमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है. सो दे आर यूज्ड फॉर द फूड ऑफ स्पेस ट्रेवलर्स. सो दे आर द यूज्ड एज ए फूड फॉर द स्पेस में जाने वालों के लिए ये एज ए फूड के जैसा यूज होता है. तो दीज आर द certain features of the algae. Next we shall study how the algae is classified into several classes.